बल्लेबाज को मिलेगा। जीएसबी समाज के भूतपूर्व खिलाड़ियों का, दिग्गज खिलाड़ियों का समागम यहाँ पर होता हुआ इस सीनियर कैटेगरी विभाग में। और पहले मैच में इस वक्त भिड़ रहे हैं टीम कटारी वीरा और टीम श्रीनिवासा। और इस बीच सहदेव बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 2 रनों पर, 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और जहां तक सवाल है इस वक्त सुधीर सामना करने के लिए तैयार है। इस बीच सहदेव की गेंद का यह गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर कर दिया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर, 3 विदाउट लॉस। और जहां तक सवाल है इस वक्त सहदेव इस वक्त ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद को मोड़ना चाहता अंतिम क्षण में और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ गेंदबाज सहदेव इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। एक नाथ जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार है। यह गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर, 4 रनों पर माफ कीजिए। एक नाथ नायक का और इस बीच गेंदबाज बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया। सेंसिबल, एब्सोल्युटली सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनाते हुए एक नाथ हल्के से गेंद को इस वक्त टैप कर दिया था, ये जानते हुए कि गेंद कवर पॉइंट पर मौजूद है, थोड़ी से पीछे मौजूद है और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 5 ऑन द बोर्ड, ये टू लूज एनी विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। सुधीर भंडारी जो कि इस वक्त सामना करते हुए यहाँ पर सहदेव भट्ट की गेंदों का और सहदेव बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ड्राइव किया, बैक जाने के बाद गेंद पहुंच एक्स्ट्रा कवर पर, 1 रन का इजाफा। ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट वेटिंग टू द बॉल टू कम ऑन टू हिज बैट एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द बैकफुट, जस्ट ड्रिवन दैट वन डाउन टू एक्स्ट्रा कवर फॉर अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 6 रनों पर, 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। 5 गेंद इस वक्त फेंके जा चुके हैं और सहदेव बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए स्वीप कर दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में इनटू द गैप एज वेल और पहला चौका इस वक्त लगता हुआ एक नाथ के बल्ले से और इस गेंद को खूबसूरती के साथ इस वक्त मोड़ दिया था। स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच, दोनों फील्डर के बीच से गेंद सीमा रेखा के बाहर गुजर चुकी है चौके के लिए। और देखिए यहाँ पर मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से गेंद को स्वीप किया था, एब्सोल्युटली परफेक्ट प्लेसमेंट एंड इज गॉट द बाउंड्री फॉर दैट स्ट्रोक। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 10 रनों पर, 10 ऑन द बोर्ड। प्रीटी गुड स्टार्ट फॉर टीम श्रीनिवासा after being losing the toss and put it to bat by team Katari in the match number 1 of senior category. Team Srinivasa made a pretty good start. In fact, it's 10 for none after first over. आता सब ज्युनियर कॅटेगरीच्या मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड ओग्गोगी नाव पैताजी. फर्स्ट मैच शेषा सूपर किंग्स आदुकोनु दर्शन, सेकंड मैच गरुडा राइजिंग स्टार्स आदुकोनु श्रेयस पै, थर्ड मैच गणेश पैंथर्स दुकोनु संकल्प, फोर्थ मैच गरुडा राइजिंग स्टार्स आदुकोनु श्रेयस पै, फिफ्थ मैच शेषा सूपर किंग्स आदुकोनु अनंतू, तशी लास्ट हनुमान वॉरियर्स आदुकोनु दर्शन. या इतले नाव वाजील प्लेयर्स आना वैरेव का मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी कलेक्ट करा. तो 2 गेंदे गेंदबाज राघवेंद्र इस वक्त फेंक चुके हैं और इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप कर दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में इनटू द गैप एज वेल. एक नाथ ने चौके के लिए लगभग जमीन के सहारे ऑफ कटर गेंद थी राघवेंद्र की और इस गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ मोड़ दिया स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए. राघवेंद्र जो कि जीएसबी समाज की प्रतिष्ठित क्रिकेट टीम वीर वेंकटेश वीवी क्रिकेटर्स का प्रतिनिधित्व एक ज़माने में वो कर चुके हैं. कई सालों से वीवी क्रिकेटर्स के लिए वो खेल चुके हैं और इस बीच ये गेंद इस बार गेंद पहुंची स्क्वायर लेग पर. 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 16 रनों पर, 16 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. और जहाँ तक सवाल है इस ओवर का, तो इस ओवर में 6 रन अब तक गेंदबाज राघवेंद्र यहाँ पर प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर इस वक्त तैयार. अंपायर विकेटों को सही करने के बाद राघवेंद्र ये गेंद स्टीयर किया. इस वक्त गेंद जाती हुई इस वक्त शॉर्ट थर्ड बैन पर, स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं और 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं. स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस 1 रन के साथ 17 रनों पर, 17 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर
सेकंड इन प्रोग्रेस और राघवेंद्र गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार, ये गेंद मोड़ दिया इस वक्त स्क्वायर लेग पर, रनआउट का खतरा लेकिन थ्रो इससे पहले के पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। निश्चित रूप से वहां पर जो सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे उनका थ्रो जरूर पहुंचा था लेकिन स्टंप्स को नहीं टकराया और एक रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 8 runs came from this over from Raghavendra, and after 2 overs team Srinivasa still looking in a good situation. It's 18 for none after completion of 2 overs. This is the match number 1 of this senior category. शेषा सुपर किंग्स आदुकुनु अनंतनी संकल्पना अंगा मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी कलेक्ट करू येऊ का? So the first ball comes और इस बार गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। 2.1 ओवर स्कोर, 18 runs on the board, yet to lose an wicket. ज्ञानेश गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं, एक नाता सामना करने के लिए तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद, पेस को वृद्धि करने के प्रयास में लेग स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी थी। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 19 रनों पर। एक और वाइड, consecutive wides for Janis. He's just searching for his right length and line at the situation. Bowled 2 consecutive wides और स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर, 20 ऑन द बोर्ड। ये गेंद ऑफ द टोज को फ्लिक करना चाहा, इस बार मिस अंडरस्टैंडिंग। दिस इज गोइंग टू बी अ सो डिजास्टर। दैट इज एन एब्सोल्युटली फनी थिंग्स इज गोइंग ऑन हियर। तो तीसरे अंपायर जहां तक सवाल है, देखिए यहाँ पर एलईडी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है जो यहाँ पर फील्डर थे जो दौड़ कर आए, देखिए सदैव फील्डर थे जहां तक दौड़ कर आए लगा और इस बार विकेट पर गेंद को लगाया नहीं और दोबारा उन्होंने विकेटों पर गेंद को इस वक्त लगाते हुए, लेकिन तब तक देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं या नहीं। तो इस वक्त तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करते हुए और जहां तक सवाल है इस वक्त ही इज गॉन। इन फैक्ट द बैट वाज इन द एयर, जब विकेट उखाड़े गए थे गेंद इस वक्त विकेट कीपर द्वारा, तब बल्लेबाज का बल्ला यानी बैट हवे पर था। द बैट वाज इन द एयर एंड बिकॉज ऑफ दैट एकनाथ इज नाउ बैकिंग टू पेविलियन। फर्स्ट विकेट लॉस्ट, 20 ऑन द बोर्ड। अजय यानी अजय भंडारी जो कि क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस बीच गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ज्ञानेश्वर कामत और तीसरा ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर। ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त ज्ञानेश्वर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, परफेक्ट गेंद, हल्के से गेंद को पुश कर दिया, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन मिलेगा। इस बीच एक रन पूर्ण करने में सफल हो चुके हैं। स्ट्रोक के साथ ही इस वक्त दौड़ पड़े थे, फलस्वरूप एक रन प्राप्त करने में सफल और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रनों पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। सब जूनियर कैटेगरी में 6 मैचेस खेले गए थे और जहां तक सवाल है उनमें से 2 टीम गरुड़ा राइजिंग स्टार और शेषा सुपर किंग्स इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त कर चुका है सब जूनियर विभाग में और सीनियर कैटेगरी का पहला मैच यहां पर शुरू हो चुका है। और इस बीच गेंदबाज ज्ञानेश्वर ये गेंद स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। 4 रन प्राप्त करने में सफल। स्टंप्स को कवर करने के बाद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ बल्लेबाज सुधीर ने और चौका यहां पर प्राप्त करने में सफल और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर। 26 for 1 इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सुधीर भंडारी फिर से एक बार सामना करते हुए स्वीप कर दिया इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। स्टिल अ बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर और ज्ञानेश्वर गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ड्राइव कर दिया एक नाथ ने। इस वक्त अर्जुन ने मिसफील्ड यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा गेंद सीमा रेखा को छू चुकी है इस वक्त 4 रनों के लिए। शॉर्ट थर्डमैन फील्डर द्वारा मिसफील्ड होता हुआ दूसरे फील्डर ने अपने पैर के जरिए, दिनेश जो फील्डर थे जिन्होंने गेंद को इस वक्त रोकना चाहता अपने पैर के जरिए, लेकिन गेंद उनके पैर को टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा के रोप रस्सी पर टकरा चुकी है 4 रनों के लिए। 31 3 overs completed।
फोर्थ ओवर स्टार्ट्स इन देयर इनिंग्स। महेश जो कि आमतौर पर लेग स्पिन गेंदबाजी करते हैं, इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सुधीर इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। सुधीर इस वक्त सामना करते हुए और पहली गेंद फुल टॉस, टर्न्स इट अवे, फाइंड्स द गैप एज वेल और खूबसूरती के साथ गेंद किस वक्त टर्न कर दिया था स्क्वायर लेग पर सुधीर ने 4 रनों के लिए और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 35 रनों पर 35 for 1। अगली गेंद लेकर तैयार रहा। ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े। इस वक्त सिली पॉइंट पर फील्डर आगे क्यों रखकर जब तक गेंद को फीड करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का लेग बाय के रूप में और लेग बाय के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 36 रनों पर 36 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। टीम श्रीनिवासा इस वक्त जोड़ चुका है और इस बीच गेंदबाज ये गेंद फुल टॉस, बेहतर गेंद इस वक्त और विकेट कीपर चूके इस वक्त सहदेव भट्ट जो विकेट कीपर थे गेंद को गैदर नहीं कर पाए ठीक तरीके से और 4 रन यहां पर बाई के रूप में प्राप्त करता हुआ टीम श्रीनिवासा। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से आसान सा कलेक्शन था लेकिन गेंद को इस वक्त छोड़ चुके हैं विकेट कीपर सहदेव 40 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट और गेंदबाज ये गेंद ड्राइव कर दिया, खूबसूरत स्ट्रोक इनटू द गैप एज वेल। दिस इज एन आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक फ्रॉम अजय। अज्जू ने इस वक्त गेंद को खूबसूरती के साथ एक्सपोज करते हुए स्टंप्स को खेल दिया खूबसूरती के साथ कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से और चौका इस वक्त बटोरने में सफल, बेहतर स्ट्रोक, परफेक्ट प्लेसमेंट। इस बार गेंद को उछालना चाहा, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा। महेश मल्ल्या गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में, अंतिम बार इस ओवर में तैयार, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और स्कोर बढ़कर इस 1 रन के साथ अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 45 रनों पर 45। नेक्स्ट मैच टीम वीरवेट्टाळ आणि गोपाल कृष्णा टीम रजिस्टर जाऊ का इनिंग्स ब्रेक आणतो टॉस जाता। Last ball in this over. Just went over the stumps after getting the batsman's inside edge. और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति कर चुका है महेश। 4 gone and it's 45 for 1 for team Srinivasa with 1 over to go in their innings. Vinay Prabhu, the bowler, starts a fresh proceedings from that side end. The first ball of the last over in the innings of team Srinivasa is now coming up. पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, टोटली मिसजजमेंट, गेंद को छोड़ दिया कि था कि शायद वाइड हो सकता है लेकिन गेंद को ज्यादा तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए इस बार मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, रन के लिए दौड़ पड़े। यहाँ पर अज्जू स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं और विकेट कीपर सहदेव गेंद को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहाँ पर बदल चुके हैं। जीएसबी समाज के दिग्गज, भूतपूर्व दिग्गज खिलाड़ियों का समागम यहाँ पर होता हुआ इस सीनियर कैटेगरी के मैच में। बाउल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ लॉफ्ट, नॉट सक्सीडेड एंड द बॉल केप्ट लो एंड द बॉल पास्ड ऑफ हिज below of his bat and stuck to his middle stump. Ajju departs and a second wicket lost for team Srinivasa. प्रभाकर का आगमन होता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए गेंदों का तो 3 गेंदे इस वक्त बाकी। प्रभाकर यानी मुन्ना, एक जमाने के वीवी के बेहतरीन खिलाड़ी के रूप में जाते थे प्रभाकर मुन्ना और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का तो गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर पर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन और इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। मिसफील्ड इस वक्त राघवेंद्र द्वारा, तो मुन्ना जो कि एक बेहतरीन स्ट्रोक उन्होंने झड़ा था, वीवी के भूतपूर्व बेहतरीन खिलाड़ी मुन्ना इस वक्त बेहतरीन चौका यहां पर झड़ चुके हैं। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 50 रनों पर। 50 कम्स अप फॉर टीम श्रीनिवासा और 2 गेंदें इस वक्त बाकी और ये गेंद इस बार स्वीप किया, रिवर्स शॉट, स्टॉप दैट वन ब्रिलियंटली, दिस इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग। और निश्चित रूप से वो खिलाड़ी जो थे, मैं यहां पर जानना चाहूंगा उनका नाम, जो फील्डर जो थे, यज्ञवंत जो फील्डर थे जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इस उम्र में भी उन्होंने इस तरीके की फील्डिंग की है, निस्संदेह काबिल तारीफ फील्डिंग, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फील्डिंग। ऑफ स्टंप से बाहर वाइड का इशारा,
52 on the board for losing 2 wicket. Last ball still left in their innings. और गेंदबाज इस वक्त तैयार रहा. ये गेंद स्वीप कर दिया. खूबसूरत स्ट्रोक. He just finished the innings in a stride with the boundary. So the innings is up. 56 runs scored by Team Srinivasa in the stipulated 5 overs, and now the target for Team Katari Veera is 57 they have to score for victory, with the required run rate of exactly 11.40 runs for they have to score for victory. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them 57 रनों का लक्ष्य, 57 the target for them. और देखते हैं यहाँ पर टीम कटारी वीरा के बल्लेबाज इस लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं या नहीं. फिलहाल टीम कटारी वीरा की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब यहाँ पर टीम कटारी वीरा की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. टीम गोपालकृष्ण आणि टीम वीरविठ्ठल टॉस आयो का तशीची आमकां इतलो वेळ हांगा वेदिकेर बसून सन्मान करूंक आनी सहाय केलेले, तशी मुखारसून जाल्यार आमकां उरे विशयान सहाय करतले विक्रम पै मामू, तशीची नरेंद्रनाथ नायक मामू, हांकां दोगांकय धन्यवाद दिवं का. एक मेमेंटो दिव न्हू, धन्यवाद दिता आसाची. नेक्स्ट मॅचाचे दोन्ही टीम टॉसा रेडी जाव का तो घेता आसाची. गोपालकृष्ण आणि वीरविठ्ठल टीम कॅप्टनान टॉसा येऊ का. So thank you so much, Gopi, and this is going to be a more interesting game of cricket, just like you mentioned about the legend players, of course, the masters who are dominated in the 80s and 90s with their fantastic game of cricket. They got opportunity once again to refresh their old memories, how they played in their young age, and one more opportunity has been given for the legend players to come and perform in this prestigious SVT Trophy 2026. अनंत भंडार माम आता टॉस चलो संदिताची. So it looks like Prakash is brought into attack, and the target which is set for the team is 57, and opening batters left and right combination for the team Veera, team Katari Veeras, and Sahadev will be the striker, and Jnaneshwar will be the non-striker. Here comes the first ball. 57 is the target, the first ball. This time down the leg side, batter just tried to get that one in the onside region, missed it completely, no run scored. Prakash, the one time is one of the good leg spin bowler who played for many cricket teams. Again played it nicely into the mid-off region, going for the quick single, and they completed that single. Sahadev is off the mark, and first run comes up here for the team Katari Veeras. Jnaneshwar is the one more big name in underarm cricket, is knowing for the big shots, big innings. One of the top class mid-order batter for playing for VB cricketers and Vijayashree cricketers as well. Right arm over wicket, balls, flicks it at one down to find leg region. That's going to be a boundary. Minimum risk and maximum result here for Jnaneshwar. The ball is just down the leg side, flicks it away down to find leg region, and he picked up a 4 for that. With that boundary, Skoban moves on to 5 without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Prakash again. Right arm over the wicket. Jnaneshwar again, quite beautifully. Just like I mentioned, little margin for error. He's a good striker of the ball. And even the little margin for error for the bowler to bowl to the leg of the batter. And next match team वीरविठ्ठल टॉस विन जाऊन बॅटिंग घेतला. Thank you. Veeravittal won the toss for the next match, and they elected to bat first. Skoban moves on to 9 on the board without loss of any wicket. 48 needed now from 26 deliveries. Prakash again. Right arm over wicket, balls outside the line of off stump too far, and wide call by umpire. One more extra. With that extra, Skoban moves on to 10 on the board without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Good start from the opening batters. The left and right combination, especially Jnaneshwar, so far picked up 2 boundaries from his bat.
Again, driven powerfully, but lack of placement. Straight to the hands of field out. Directed, but batter is safe. So, and over number first is in progress. Still one more left, one more ball left in this over. Powerfully struck by Jnaneshwar, but placement is not good enough. Eknath is fielded very well in that mid-on region. Again, a full toss, and no, he drops it. Looks like it taken, but it touches the ground. But good attempt by the fielder. And over number first, which is comes to an end after completion of first over, chasing 57 to win this match. Is 11 on the board without loss of any wicket. 46 needed now from 4 overs, and that means 46 which is required for the victory. And well, what a fantastic cricket tournament is in progress. Day number 1 has been outstanding, and very good number of spectators gathered here to enjoying the game of cricket. Of course, it's a good start for the year 2026, the first day of the new year, and it's new day, new beginning, and new tournament. And this time they mix up, and Johnny Jnaneshwar. My goodness, Sahadev once said he responded for the run. That's why Jnaneshwar started to run, and quickly Sahadev is taking back his decision. He runs back, but unfortunately Jnaneshwar is back in the pavilion in the form of run out. Huge wicket for the team, Srinivasa. It's a big mistake. In fact, Jnaneshwar is looking so good in the middle, striking the ball very well, and unfortunately is back in the pavilion. Now Dinesh is a new batter, and one more very talented the player Sudhir is knowing for some strokes, which is he loves to play the shape shot, and wait and see. Ajju, right arm over the wicket balls. Again turns it one to square leg region. They picked up a single for that. With that single, Skobana moves on to 12 for the loss of 1 wicket in the 11. Correction, 11 for loss of 1 wicket. 12 for 1 in the over number. Second is in progress. Ajay, full toss, played it straight to the hands of mid-on, and Mohan Pai, one more big name in underarm cricket, is there in that mid-on region. Fields the ball, only a single for the batter. With that single, Skobana moves on to 13 for the loss of 1 wicket in the over number. Second in progress. Sudhir and Sahadev, left and right combination, have to do the job here for the team. Veera, the correction, the team Veera, Katari Veeras, in fact, chasing a total of 57 to win this match. They're looking for some good start. Sudhir batted very well for the team. Srinivasa, unbeaten, remains unbeaten, scored some important runs from his bat. This time again, lovely delivery there from Ajju. Dinesh just tried to play that one into the mid-off, but again played it back to bowler, not for run. It's turning out to be a good over so far from Ajju. Quiet over. This time fired outside the line of off time. Just right now, umpire will not going to give the wide because Dinesh is shuffled across the line of the delivery, and that's why umpire just extending the line outside the line of off stump, and no run scored. Here comes Ajju. Fantastic over is in progress. Played it back to bowler. Lovely piece of fielding on his follow through. Great over which is comes to end here from Ajju. After completion of over number 2, it's 13 for 1. So what a great over, quiet over, and especially Dinesh couldn't manage to get the runs what they really wanted from this over. Now target is looking a little bit tougher and stiffer. 44 needed from 18. Now Prabhakar, what we're talking about, one more big name in VV cricketers. He represents for VV cricketers, known to be a very athletic player, very good runner between the wicket, very good fielder, good leg spin bowler, fantastic all-rounder. Prabhakar, the Munna, bowling right arm around the wicket. Starts with the delivery which is called as a wide. Of course, after the long break is coming to the ground. Again played it down to mid-on, and we're going to pick the single for that. With that single, Skobana moves on to 14 for the loss of 1 wicket in the over number. Third is in progress.
This time wanted to go for a sweep shot. Lovely delivery. And Prabhakar saying that, yes, it's a fair delivery. There on the legs of the batter. One more single. One more single with that single scope and moves on to 15 for the loss of 1 wicket. One more single added to total with that single scope and moves on to one more 16 for 1. Wide outside the leg stump and so one more. Looks like it's going to be a boundary there. Wicketkeeper missed it, Sudhir, and by 4, and 4 more, and it's a very important run. 22 for 1. Over number 3 in progress. Last ball remaining, last ball. 2 wides in this over. Other nobody, at least a mistake unto. So man was scoring. This time lovely shot, played it down to square leg boundary for 4 runs. So with that bound, is covered moves on to 26 for 1. 3 overs completed. .26 on the board and over number 3 which is comes to an end. The 2 overs remaining and 21 more runs required for the victory. So here comes the next one. Played it back to bowler and misfielded. It's going to be a lucky boundary and Mohan Pai brought into attack and played it back to bowler. Ball is just deflected from so with that bound is covered moves on to 30 on the board for the loss of 1 wicket. That means another 27 needed for the victory in 11 balls. Yes, I'm going to be a one more single. With that single score moves on to 31 for the loss of 1 wicket. So they're still trying to catch that required run rate. 26 needed from 10. Here comes Mohan Pai. Coming down the track, chance of run out. Direct hit, but umpire says not out. Underarm throw from Sudhir. And Sahadev missed it, very important delivery. One more dot ball. Mohan Pai again, back to his body mark. Right arm round the wicket to Sahadev. Needed some boundary, again played it down to mid-on, but not more than a single. With that single score was on to 32 on the board for the loss of 1 wicket. 25 needed for the victory now. Dinesh have to deal with some boundaries. Dinesh Pai. Mohan Pai, very useful bowler, the leg spin bowler. Oh, this time delicately played. Oh, very good stop. Excellent stop. Vinayak using his feet. Very intelligent cricket there from Vinayak. You know exactly, cannot bend quickly, so just using his feet and is saving the boundary for his team now. 33 for 1. Lovely cricket there from Vinayak. And 24 needed now from 7 deliveries. Here comes next delivery. This time is gone. They played it down to this square leg in pull and Mohan Pai got the wicket. 1 more wicket back in the pavilion. Now last over remaining.
24 needed for the victory, and wait and see who will go into ball the last over. Sudhir may be the best option to bowl the last over. They have Kishore is also one good bowler there in the square leg, and Vinay Prabhu, Sudhir brought into attack to bowl the last over. 24 needed from 6 ball. Mid off, mid on. Short mid wicket, short square leg in front of square, short fine leg. The fielder down at gully, backward point. Short cover, mid off. And Sudhir will go into ball the last over. 24 needed. Balled him, cleaned him up. Excellent leg spin deliveries. And Dinesh tried to play the improvising sweep shot, missed it completely. Wicket number, one more wicket back in the pavilion. Now 24 needed from 5. Even 5 boundaries will not going to help the team to win this match. Because 24 needed, I think just a formality is left in this game for team Srinivasa to win this match. Mahesh, the new batter. This time swept the ball, but straight to the hands of fielder. Wicketkeeper Ajju fields the ball. 4 balls and 24 required. Even 4 boundaries will not going to help the team to win this match. One more lovely delivery. Excellent delivery indeed. 3 balls remaining. Sudhir is not giving any room for the batters. Bowling along the carpet. Making it difficult for the batters to get any kind of stroke. This time lofted and is gone. Of course, this was a habit of the batters hitting the ball in the air. You can't get runs for that, but you can, because of the last 2 seasons, we are giving the opportunity for the batter to get the ball into the outside the boundary line. They can get the 6 for that, but in this particular season, batter have to drive the ball along the ground, not to take in the aerial route. 24 for 2, 33 for 2, 4. Boundary comes up. Raghavendra. Maybe Raghavendra needed little bit early in this innings. So at Modern least, rice mill ache. Venkatrai Malya. Anga ground aila sati. Vedike rev kamundi mungetas. last ball of the match. And Rise, that's it. A huge victory. The victory of 19 runs, run out taken place. So congratulations, Srinivasa.